This is question, a very important question. First, we read the question carefully. Bus B leaves base P4 rescue at 4 p.m. Other bus are traveling at 60% of the speed of B leaves Q4P at 5 p.m. The two buses passes each other at place V such that the distances PV and BQ are in the ratio 7:3. How many hours would be B takes for its journey from A to B? First of all, we have to visualize this question. We have to visualize this question. How? See, later this point is B, and this point is B, and this point is Q. This point P and this point Q and this point is B as given in the question. At P, bus B is there, and at point Q, bus R is there, traveling in opposite direction. Bus B starts at 4 p.m. while Q at 5 p.m. Means there is a difference of 1 hour when we started. Leave the speed of bus B by kilometer per hour. So it is given that the speed of bus R is 60% of y. So 60% of y can be written as 3y upon 5 kilometer per hour. Again, leave the total distance from P to Q be x kilometer. It is given that the ratio PV and VQ means PV and VQ is given 7:3. It means if the total distance is 10 kilometer, then the distance PV is 7 kilometer. So because the total distance here is x kilometer, so we can write the distance PV is 7x upon 10 kilometer. And distance VQ is 3x by 10 kilometer. It is given. We are taking in with respect to x, means the total distance from B to Q. Now, for the time, we know that here P to V, the distance is given and speed is given. Distance upon speed is time. So, time P to V, you divide this distance 7x by 10 by y, it becomes 7x upon 10 by r. Means the time taken from P to V by bus B is 7x upon 10 by r. Similarly, the time from R to V, the time is distance upon speed. Distance is given 3x by 10 and speed is given 3y by 5. Then this 3x by 10 divided by 3y by 5, we get x by 2r. Here it is very important to note r. So to create that, let the two buses are meeting at this point B at 10 p.m. Suppose the bus here is meeting at 10 p.m. or right. So here it will be taking 6 hours, while it will be taking only 5 hours. It means train B is taking 1 hour more than the bus R at where they are meeting. So our equation becomes, the relation becomes, so it means when you subtract 1 hour from this time, means from here to here, you will get the time from Q to V. So 7x upon 10y, here is the time, minus 1. Why we are subtracting 1? Because this bus B is taking 1 more hour, because it starts at 4 p.m. Why? Bus R starts at 5 p.m. That is why the difference of 1 hour. So 7x upon 10y minus 1, that is equal to x upon 2y. Now we can consider x upon y. We can say this is t, and this x is distance, y is the speed, and distance upon time is speed, that is time. So further we can write here 7t, because we have put x upon y, that is t, minus 1, that is 1x upon y means t by 2. In place of
we replace t in place of x upon y. And further simplification to t is 10, and that is why t is equal to 5. What is t x upon y? X is the total distance from here to here. That is distance. And speed of bus B is y kilometer per hour. Means here to here, it goes at the speed of y kilometer per hour. We know that distance upon time, distance upon speed is equal to time. So x upon y is equal to distance upon time. So t is equal to 5 hours. It means the bus B will be taking, bus B will be taking 5 hours from P to Q. Before the evacuation, we have to go from P to Q. So time taken by bus B from the journey of P to Q will be 5 hours. And now in Hindi. एक बस है बी, प्लेस बी को प्लेस क्यू के लिए 4 बजे स्टार्ट होती है, रवाना होती है। ये जो बस सेकंड बस है आर, फर्स्ट बस है बी और सेकंड बस आर है जो क्यू पे है, उसकी स्पीड बी की बस की स्पीड की 60% है। ये बस 5 बजे क्यू पॉइंट से रवाना होगी और दोनों बसें कुछ टाइम बाद वी पॉइंट पे मिलती है और जो डिस्टेंस पी से वी और क्यू से वी है उसका रेशियो 7:3 है। बताइए कि बस बी को पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए देखिए हमने लिया कि एक पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। आप यहाँ पे देखिए बस पॉइंट पी है और बस पॉइंट क्यू है। पॉइंट पी से एक बस बी रवाना होती है और एक बस आर रवाना होती है। बस बी 4 बजे, शाम के 4 बजे रवाना होती है और बस बी क्यू सॉरी आर शाम के 5 बजे रवाना होती है। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस ऑफ स्टार्टिंग टाइम है वो 1 आवर, 1 घंटा। मान लीजिए हमने कहा कि बस बी का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है और ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आर बस है उसका जो स्पीड है वो 60%, 60% है बी बस से। तो इसका y का 60% होगा, देखिए 3y/5 किलोमीटर पर आवर। 60% ऑफ y इज 3y/5। अब आगे देखिए जो डिस्टेंस है पी टू क्यू है वो x किलोमीटर सपोज किया है, क्योंकि रेशियो दे रखा है जो यहाँ से पी से वी और वी से क्यू का जो अनुपात है वो 7:3 दे रखा है। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं और अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, RAPI। ये जो डिस्टेंस है देखिए टोटल अगर 10 किलोमीटर है तो ये 70% ऑफ 10 किलोमीटर हो जाएगा। 7/10 हुआ और क्यूवी जो डिस्टेंस है वो 3x/10 किलोमीटर यहाँ पे भी रखा है। देखिए जब हमारे पास डिस्टेंस भी हो स्पीड भी हो तो हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। समय होता है दूरी और स्पीड के अनुपात को कहते हैं। मीन्स अगर आप डिस्टेंस में स्पीड को से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम है। पी टू वी देखिए ये डिस्टेंस 7x/10 को y से डिवाइड करिए तो ये हमारे पास डिस्टेंस पी टू वी है 7x/10/r आ गया है। इसी तरह से ये डिस्टेंस आर टू वी डिस्टेंस 3x/10 किलोमीटर है और स्पीड 3y/5 है। आप डिवाइड करेंगे तो x/2y। अब देखने की बात यह है कि ये जो बस यहाँ से 5 बजे रवाना होकर यहाँ मिलती है और ये बस 4 बजे रवाना होकर यहाँ मिलती है, तो ये बस इस बस से 1 आवर ज्यादा चलती है।
मान लीजिए ये दोनों बसें 9 बजे निकले, तो देखिए 9 बजे का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे 5 आवर्स चली, जबकि ये तो 4 ही घंटे चली। दोनों का टाइम इक्वल कैसे हो? इसके टाइम में अगर 1 आवर कम कर देंगे तो इसका टाइम आ जाएगा, जो कि दोनों का इक्वल है। तो अब आप, मैंने 7x दिस टाइम -1 दैट इज दिस टाइम। अब हमें x अपॉन वाई की जगह हम t ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है b बस के लिए, और b बस के लिए b का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। x अपॉन वाई की जगह तो t से रिप्लेस करिए, उसकी जगह पुट कर दीजिए, रख दीजिएगा, तो हम फर्दर जो हमारा इक्वेशन बचेगा वो 70.10 - 1 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू 5 आवर्स। मीन्स t मीन्स एक्स अपॉन वाई, यहाँ से बस b को p से q तक जाने में 5 घंटे लगेंगे। और ये हमारा करेक्ट आंसर किया। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग। थैंक्स, मैं डी शर्मा, मैथ्स। थैंक यू।